Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about the nursing care plan, that is risk for injury, and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the असाइनमेंट वर्क पर्पज़। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर रिस्क फॉर इंजरी का नर्सिंग केयर प्लान लर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल सेट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान फॉर रिस्क फॉर इंजरी। तो फ्रेंड्स हम नर्सिंग केयर प्लान में डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज़ करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन। तो ये सारे स्टेप्स हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में, जिसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। तो यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट होगा रिस्क फॉर इंजरी का। सब्जेक्टिव डाटा में हमको लिखना है नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज द रिस्क डायग्नोसिस, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा हेयर असेस हिस्ट्री ऑफ फॉल एंड इंजरी, assess mental status, assess the patient's balance and gait। तो ये होगा ऑब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखना है रिस्क फॉर इंजरी में बी रिलेटेड टू अल्टर्ड सेरिब्रल फंक्शंस, इम्पेयर्ड मोबिलिटी, लॉस ऑफ लिम्ब, इम्पेयर्ड विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मालन्यूट्रिशन, साइकोसिस एक्सेट्रा। तो ये सारे रिलेटिंग फैक्टर है, जिसमें से हमको कोई भी यहाँ पर एक फैक्टर लिखना है, मीन्स जो फैक्टर हमारे पेशेंट से रिलेटेड है, जैसे कि रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू अल्टर्ड सेरिब्रल फंक्शन, इस तरह से लिख सकते हैं। या रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू इम्पेयर्ड मोबिलिटी, या रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू लॉस ऑफ लिम्ब, या रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू इम्पेयर्ड विजन। तो इस तरह से जो भी रिलेटिंग फैक्टर हमारे पेशेंट से रिलेटेड है उसको हमको यहाँ लिखना है। मीन्स हमने यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर दिए हैं, तो आप कोई भी डायग्नोसिस में अपना सेट कर सकते हो। तो गोल हो गया यहाँ पर टू रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी। प्लानिंग और इंटरवेंशन मीन्स कि हमको क्या प्लानिंग करना है पेशेंट के लिए जिससे कि इंजरी का रिस्क है वो रिड्यूस हो। रेशनल मीन्स स्पेसिफिक इंटरवेंशन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, एंड इम्प्लीमेंटेशन मीन्स द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, मीन्स जो हमने प्लान किया है वो हमको अप्लाई करना है। तो देखते हैं फर्स्ट ट्रांसफर द पेशेंट टू ए रूम नियर द नर्सेज स्टेशन। रेशनल होगा प्रोवाइड मोर कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड क्विक रेस्पॉन्सेज टू कॉल नीड्स। इम्प्लीमेंटेशन होगा ट्रांसफर नियर टू नर्सेज स्टेशन। नेक्स्ट सेकंड लिखते हैं फैमिलाइज द पेशेंट विद द लेआउट ऑफ द रूम। रेशनल होगा एन इंजरी इज मोर लाइकली टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय द एन इंडिविजुअल इफ द सराउंडिंग्स इज नॉट familiar, such as furniture and equipment placement in a certain area. Implementation of patient familiarized with room. Number third, provide appropriate room lighting, especially at night. Rational होगा improvement in the light, reduce fall and injury. Implementation होगा proper lighting available. Number fourth, provide assistive devices for transport and ambulation. Rational होगा assistive aids such as cane, walker and wheelchair can improve patient stability and balance when ambulating. Implementation का assistive device provided. Number 5, the patient has a new onset of confusion, delirium, provide reality orientation when interacting. Rational होगा reality orientation can help prevent for decrease the confusion that increases the risk of falling for patient with delirium. Implementation होगा reality orientation completed. Number 6, place item that patient uses within easy reach, such as call light, urinal, water and telephone. Rational होगा items that are too far may require the patient to reach out or ambulate unnecessarily and can potentially be a hazard or contribute to fall. Implementation होगा place item in easy reach. Number 7, encourage assistance when getting out bed. Rational होगा encourage the patient to use their call button and request assistance when going to the bathroom or getting out of bed to promote safety. Implementation होगा encourage. Number 8, response to call light as soon as possible. Rational होगा helps prevent the patient from going out of bed without any assistance. Implementation होगा responded to
early. Number 9, place bed at the lowest possible position. Rational होगा keeping the beds closer to the floor reduce the risk of fall and serious injury. Implementation होगा place bed placed near lowest position. Number 10, use side rails on beds as needed. Rational होगा reduce the risk of falls. Implementation होगा side rail used. Number 11, assist the patient with frequent position changes. Rational होगा assisting with frequent position changes will decreases the potential risk of skin injury. Implementation होगा assisted during position change. Number 12, complete purposely overly rounding. Rational होगा this allow the nurse to check on the patient frequently. Implementation होगा hourly rounding done. Number 13, avoid use of restraints obtained a physician's order if restraints are needed. Rational होगा if the patient are restrained they can sustain injuries. Implementation होगा avoided use of restraint. Number 14, apply medical identification bracelet for patient at risk for injury from dementia, seizures or other medical disorder. Rational होगा healthcare provider needs to acknowledge who has the condition for they are responsible for for the implementing actions to promote patient safety. Rational होगा implementation होगा applied identification bracelet. Number 15, ask family or significant other to be with the patient to prevent him or her from accidentally falling or pulling out tube. Rational होगा this is to prevent the patient from accidentally falling or pulling out tubes. Implementation होगा ask family or significant other. Number 16, eliminate or drop all possible hazards in the room such as razor, medications, sharp objects and matches. Rational होगा this is to prevent the patient from any unpleasant experience due to dangerous objects. Implementation होगा all possible hazards eliminated. Number 17, avoid extreme hot and cold around patients at risk for injury. Example, heating pads, hot water for bath, showers. Rational होगा patients with decreased cognition or sensory deficit cannot discriminate extremes in temperature. Implementation होगा avoided extremes hot and cold. Application. Number 18, validate the patient's feeling and concern related to environmental risk. Rational होगा validation lets the patient know that the nurse has heard and understand what was said and it promotes the nurse-patient relationship. Implementation होगा patients feeling validated. Number 19, a patient sit in a stable chair with armrest, limits use of wheelchair except for transportation as needed. Rational होगा patients are likely to fall when left in a wheelchair because they may stand up without locking the wheel or removing the footrest. Implementation होगा aided patient during sitting. Number 20 होगा coordinate with physical therapist for strengthening exercise and gait training to increase mobility. Contact occupational therapist for assistance with helping patients perform activity of daily livings. Rational होगा gait training in physical therapy has been proven to effectively prevent fall. Implementation होगा coordinated with the therapist. Number 21 होगा educate patient about the safety ambulation at home, including the use of safety measures such as handrails in bathroom. Rational होगा patient's knowledge about his or her condition is vital to safety and recovery. Implementation होगा education given. तो ये थे डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमको पेशेंट को अप्लाई करने सारे इंटरवेंशंस लिखने के बाद हम लिखते हैं एवेल्यूशन जो नर्सिंग केयर प्लान का लास्ट स्टेप्स है। तो देखते हैं अब एवेल्यूशन में क्या लिखना है। तो एवेल्यूशन होगा नाउ रिस्क फॉर इंजरी रिड्यूस, जो हमारा गोल था टू रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी, वो हमने अचीव किया बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो पेशेंट को प्रोवाइड करें। तो इस तरह से हम यहाँ रिस्क फॉर इंजरी का नर्सिंग केयर प्लान लिखेंगे। तो आप यहाँ पर डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स जो हमने फॉर्मेट में यूज़ किए नर्सिंग केयर प्लान के में, तो इस तरह से आप सेट करके यहाँ पर रिस्क फॉर इंजरी का नर्सिंग केयर प्लान कंप्लीट कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।